Hello and welcome to another session. In this session, we are going to complete 1 year environment current affairs. This is the first part. We're going to cover whole environment in two parts. So let's begin this session with the first news, and that is Great Indian Bustard. The picture which you can see on your screen is the picture of Great Indian Bustard. This bird is critically endangered. This bird is critically endangered. Why we are reading this news? First, let's see that Gujarat got its first chick in decade. So recently, in the month of the March, Great Indian Bustard has given a birth to a chick in the Gujarat. This bird is mainly found in India in only one state, that is Rajasthan. And in Rajasthan, it is mainly found in one place that is called Desert National Park. Desert National Park. For the exam purpose, we need to know five things. First, it is the state bird of Rajasthan. State bird of Rajasthan. Second, it is one of the heaviest body in the world. Heavy body with poor frontal vision. Poor frontal vision. Third, to conserve this Great Indian Bustard, Rajasthan government has launched one project called Project Great Indian Bustard in 2013. Project Great Indian Bustard in 2013. Now, the next point is it is critically endangered and it is the indicator species of grassland ecosystem. Indicator species of grassland ecosystem. Okay, now this is the whole news about the Great Indian Bustard. इसके बाहर प्रीलिम्स में कोई चांस होता नहीं है इन स्पेशली इन दी एपीपीसीएस और इवन इन दी यूपीएससी देयर विल नॉट गो बियॉन्ड दिस. ठीक है, then it will not be a general studies paper, it will become a environment or ecology paper then. ठीक है, so five things which are important for the prelims. First, state board of Rajasthan, heavy body with the poor frontal vision. Third, project Great Indian Bustard started in 2013 by the Rajasthan government. Fourth, they are the indicator species and their IUCN status is critically endangered. Now, why their population is declining? Let's look at these points first. Why their population is declining? Often collide with wind power infrastructure. Wind power infrastructure due to their heavy body and poor frontal vision. Due to their heavy body and poor frontal vision. Second, habitat loss. Habitat loss. Now, I said they are the indicator species of the grassland ecosystem. Let's understand what is indicator species. Indicator species. इंडिकेटर स्पीसीज वो होती हैं जिसके प्रेजेंस एब्सेंस और उसके हेल्थ के नंबर्स से हमें पता चल जाता है कि इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है. ठीक है, सो स्पीसीज whose presence
absence reflects the health of ecosystem, the health of ecosystem. ठीक है, so उनके प्रेजेंस और उनकी एब्सेंस से पता चल जाएगा कि उसकी हेल्थ क्या है. Now there are two characteristics of the indicator species. First, they are very sensitive to environmental change. Sensitive to environmental changes. Second, population has correlation. Population has correlation with health ecosystem. With health ecosystem. Okay. If you want to take another example, you can take the example of butterfly. Okay, butterfly are the indicative species of sulfur pollution. Okay, wherever you have the sulfur pollution, you'll find them. Butterfly or sulfur population example थोड़ा सा narrow हो जाएगा. I'll take the example of climate change. So butterfly are the indicators of the climate change. Even frogs are the indicator species. They indicate the drought, है ना, वो उनको पहले ही पता चलता है कि ड्रॉट आने वाला है. सो द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रॉग बेसिकली टेल यू अबाउट द ड्रॉट कंडीशन. सो दे आर आल्सो इंडिकेटर स्पीसीज. एपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था कि विच इज द इंडिकेटर स्पीसीज, उसमें ऑप्शन थे. सो वाटर हाइसिंथ, ठीक है, जो हर एक पॉन्ड में देखा होगा ग्रीन कलर का पूरा कवर कर लेता है उसको, तो उससे पता क्या पता चलता है कि उस इकोसिस्टम की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है, बिकॉज इट्स अ एलियन स्पीसीज. तो वो क्या बताता है, हेल्थ अच्छी नहीं है उस वाटर इकोसिस्टम की, तो दैट इज द इंडिकेटर स्पीसीज. ठीक है, वाटर हाइसिन, दैट वाज आस्क्ड इन एपीपीसीएस. ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द सेकंड न्यूज़. Second news is India adds its okay, India add its 100 Ramsar site. And why wetlands are important? Why wetlands are important is the topic of mains. I'll make a separate video on this topic. Let's understand the what is Ramsar sites. Ramsar sites is a wetland designated as internationally important under Ramsar Convention. Under Ramsar Convention. Now, what is the Ramsar Convention? Ramsar Convention was signed in 1971 in the Iran city called Ramsar. This convention basically talk about preserving the important wetlands. Now, India have more than 27,000 wetlands. All the wetlands are not in the Ramsar sites. Only 100 sites are under the Ramsar Convention. Okay, so Ramsar Convention. So Ramsar Convention is an intergovernmental treaty signed in 1971 in Ramsar, Iran by UNESCO. ये याद रखना है, UNESCO. And it came into the force in 1975. ठीक है, it is also the oldest environmental treaty which is focusing on a single ecosystem. ठीक है, बाकी भी है हमारे पास, but they are focusing on the multiple ecosystem. It is the environmental treaty which is basically focusing on one particular ecosystem, that is wetland ecosystem. ठीक है, now why this news in why we are dealing with this news? India adds its 100 Ramsar sites. ठीक है, इसका नाम है 100
Ramsar site. It is in UP, and the name is Jay Prakash Narayan Bird Sanctuary. Jay Prakash Narayan Bird Sanctuary. Okay, and it is also known as Surhatal. Surhatal in Balia district of Uttar Pradesh. Balia district of उत्तर प्रदेश. ठीक है. सो क्या है रामसर कन्वेंशन? क्या है? वेटलैंड को बचाने के लिए. कब साइन हुआ था? 1971 में साइन हुआ था. कब फोर्स में आया? 1975. कौन सी बॉडी थी? यूनेस्को की बॉडी के अंदर में वो साइन किया. इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीटी विच फोकस ऑन द स्पेसिफिक इकोसिस्टम. नाउ व्हाट अदर क्वेश्चन दे कैन आस्क? दे कैन आस्क यू which state has the highest number of wetlands? ठीक है, in Ramsar sites. The answer is Tamil Nadu. Tamil Nadu has 20 sites, followed by Uttar Pradesh, which has being 13 sites. Arunachal Pradesh has no Ramsar sites. Arunachal Pradesh has no Ramsar sites. तो ये एग्जाम के लिए याद रखना है. Now, we also celebrate World Wetland Day on every 2nd Feb of the year. ठीक है, World Wetland Day 2nd Feb. ठीक है, ये हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. There is a क्या बोलते हैं pattern in every PCS. You'll find they ask the day and they ask you the theme of that particular day. ठीक है. Now the theme for this year Wetland Day was wetlands and traditional knowledge. Wetland and traditional knowledge, celebrating cultural heritage. Celebrating cultural heritage. Okay. Now, why I think this question is important for you this year? It was started in 1997. Okay. So we started celebrating this World Wetland Day in 1987, and in 2022 it became the United Nations International Day. Okay. Now, in year 2026, this year only, it marked 50th anniversary of World Wetland Day. World Wetland Day. That's why I think this question can be asked in your prelims. But one question surely will come from the wetland, and the points we have written on the screen, they are more than sufficient for the prelims part. Okay, the 100 site is your Jay Prakash Narayan Bird Sanctuary, UP. Tamil Nadu has highest Ramsar sites, 20 sites. UP 13. Arunachal Pradesh has no Ramsar sites. World Wetland Day, 2nd Feb. Theme wetland and traditional knowledge, celebrating cultural heritage. Okay, and it is the 50th anniversary of the World Wetland Day. Okay, and Ramsar Convention related to wetland conservation signed in 1971. Okay, let's get into the next news, and that is E85 fuel. You know how many controversies are going on the ethanol based blending E20 and 100% ethanol fuel. Okay, so what is E85 fuel? E85 fuel is
high ethanol blended high ethanol blended fuel, which nearly comprise of 80 to 85% of ethanol and 15% of petrol. 15% of petrol. This E85 fuel is not basically for the petrol vehicles. They are designed for the one particular type of vehicle, that is, we call them flex fuel vehicles. For flex fuel vehicles. Okay. Now, why this news is important? Tell you. This E85 fuel was launched on June 5. And this June 5, we celebrate June 5 as World Environment Day. World Environment Day. Why June 5 was chosen as the date for World Environment Day? Because on that particular day in 1972, we have signed, we had a first conference, we call it Stockholm Conference. Stockholm Conference. Okay. Now, what is the importance of this World Environment Day for our example purpose? First, the theme. Again, one of the favorite question of the different PCS paper, even for the Arunachal Pradesh, is the same. Okay. This theme is inspired by nature for climate for our future. Inspired by nature for climate for our future. It was the theme of the World Environment Day. And who hosted this year World Environment Day? It was hosted by the Azerbaijan. Okay. It was hosted by the Azerbaijan. So यहाँ पे क्या रखना है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है? जून 5 को. क्यों बनाया जाता है? 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस साइन हुआ था 5 जून को, उसके इसलिए उस डेट को चूज किया गया. थीम क्या है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर. कहाँ होस्ट किया गया था? अजरबैजान ने होस्ट किया था. ठीक है. चलो, let's get into the next news. The next news is first environmental conference on transitioning away from the fossil fuel. ठीक है. अब क्या हुआ कि नियरली 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, 50 कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स और ये 50 कंट्रीज वो जो 50% जीडीपी को शो करती हैं. 50% ग्लोबल जीडीपी. ठीक है. They assembled in Colombia, and the place where this conference held was the Santa Marta. Santa Marta. If I pronounce galat, so please. Santa Marta in Colombia. So it is also known as Santa Marta Conference. ठीक. Now what they are discussing? This is the first time they are discussing कि how to transit from the fossil fuel. कि कैसे धीरे धीरे fossil fuel को कम किया जाए. ठीक है. Now बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है. ठीक है. फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल. कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है तो वो ये है कि जो वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट इमिटर्स हैं, ग्रीन हाउस इमिटर्स, है ना, वो है
World's largest greenhouse emitters are USA, China and India. ओके, और इनमें से कोई भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट नहीं था, तो इतना याद रखना है अपने। डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस? नो। क्यों? क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्री से, वी डो नॉट हैव द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कि हम डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल से अपनी इकोनॉमी को ट्रांजिट करके क्लीन एनर्जी पे ले जाए। वी आर डूइंग गुड इन दिस रिन्यूएबल एनर्जी वाले पोर्शन में, बट स्टिल वी आर मच मोर बेस्ड ऑन दी फॉसिल फ्यूल, सो इट नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डायरेक्टली जंप फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी टू क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। ओके, ठीक। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन। Let's get into the another topic. This turtle, which is on the screen right now, is the Ganges soft shell turtle. क्या नाम है इसका? Ganges soft shell turtle. ठीक है. Why it was in the news? First time we have tagged, ठीक है, India's first satellite tagged turtle was released in Kaziranga National Park. In Kaziranga National Park. ठीक है. And this Kaziranga National Park is also a tiger reserve. ठीक है. Now यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे रिलीज किया गया? सो काजीरंगा में रिलीज किया इसको, सैटेलाइट टैग्ड, ठीक है, टू ट्रैक डाउन हिज एक्टिविटीज, ठीक है, नाउ, और टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्टल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ दिस टर्टल? द IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड. ठीक है, दे कैन सिंपली आस्क यू कि गंगे सॉफ्ट shell turtle is critically endangered, vulnerable or least concern. The right answer is the endangered. ठीक है. The first satellite tag Ganges soft shell turtle released in Kaziranga National Park and Tiger Reserve. Okay, with the IUCN status endangered. Let's get into the next news. The next news is India's ranked third globally in renewable energy installed capacity. ठीक है. So there is one report. रिपोर्ट का नाम है रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2026, and this report is released by one international organization, International Renewable Energy Agency. ठीक है. अब इंडिया का रैंक थर्ड है इंस्टॉल कैपेसिटी में, कि हम कितनी एनर्जी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट कौन है इसमें? चाइना. चाइना इज प्रोड्यूसिंग 2258 0.2 गीगावाट एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है. फॉलोड बाय यूएसए 467 0.4 gigawatt. Third is India. That is 250
0.52 गीगावाट। पॉइंट में याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इंडिया इज द थर्ड इन द इंस्टॉल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब जो इस वक्त हमारे पास है और जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो रिन्यूएबल एनर्जी में कितना रैंक है हमारा? थर्ड रैंक है। फर्स्ट कौन है? चाइना। अब चाइना और इंडिया में इतना गैप है कि वी नीड एटलीस्ट 10 टाइम ऑफ अवर प्रेजेंट डे इंस्टॉल कैपेसिटी अगर उनको कम्पीट करना है उनके साथ में, ठीक है। इवन यूएसए इज lagging far behind, 467 only. India is 250. After India, it is the Brazil. You don't need to remember the Brazil. Just need to remember these three: China, USA, and India. Okay. In the terms of renewable energy installed capacity globally. Under which report? Renewable Capacity Statistics 2026, which is released by the International Renewable Energy Agency. Okay. Now, let's get into the last topic for this session, and this is India's first green methanol production plant. ठीक है। अब फर्स्ट टाइम हम लोग मिथेनॉल को प्रोड्यूस करने वाले हैं। व्हाट डू मीन बाय द ग्रीन मिथेनॉल? दैट मींस विल बी यूजिंग प्लांट फीड स्टॉक। ग्रीन मिथेनॉल, प्लांट फीड स्टॉक। और कौन से प्लांट को यूज करेंगे? विल बी यूजिंग ज्वेलीफेरा, प्रोपिस ज्वेलीफेरा। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? प्रोपिस ज्वेलीफेरा इज एन एलियन स्पीसीज, ठीक है। वो एक एलियन स्पीसीज है, वो इंडियन स्पीसीज नहीं है। और ये इन्वेजिव स्पीसीज, इन्वेजिव मतलब जो वहां की नेटिव्स को खत्म कर देते हैं। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। अब इस प्लांट को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? मिथेनॉल बनाएंगे, ठीक है। कहाँ बनाएंगे? देयर इज वन पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात। तो सिंपल ये पूछ सकता है कि पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगा है इंडिया में? सो इट वाज एस्टेब्लिश इन गुजरात। कहाँ पर? कांडला पोर्ट में, गुजरात में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ कुछ नया है। व्हेन विल रीड अबाउट द बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया, विल रीड समथिंग मिथेनॉल इकोनॉमी, मिथेनॉल इकोनॉमी। और ये टर्म किसने दिया है? दिस टर्म वाज गिवन बाय द नीति आयोग, ठीक है। सो दिस इज फॉर द मेंस। आई विल कवर दिस सेपरेटली व्हेन विल बी रीडिंग दिस biofuels का topic. Now, let's understand the some biofuels. There are 4 type of biofuels. We call them 4 generation of biofuels. Let's understand the 4 generation of biofuels. Okay. First generation of biofuels. The first generation of biofuels are basically produced from the food crops. Food crops, which are rich in sugar, starch, and vegetable oil. There is a second generation biofuels. Second generation biofuels. These biofuels are produced from the agriculture residues. Agriculture residues. The third generation biofuels and the fourth generation biofuels, both are under research in India. And in this fourth generation biofuel, we use genetically modified organisms. Genetically modified algae to produce biofuels. तो क्या याद रखना है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहाँ से बनाते हैं? फूड क्रॉप से। सेकंड कहाँ से बनाते हैं? एग्रीकल्चर रेसिड्यू से। Are more focus, India is focusing on the second generation biofuels. Why? Because in Delhi or in the surrounding of the Delhi, Haryana, Western Uttar Pradesh, there in Punjab, there is a problem of pollution. And this pollution is mainly caused by the
agriculture residue. When the farmers burn the agriculture residue, it create pollution in the Delhi in the winter times. Okay. So what we are doing, we are focusing on this second generation biofuel so that we can use that agriculture residue to produce biofuels. ठीक है. So इतना याद रखना है. Important part is कि पहला ग्रीन मिथनॉल प्लांट कहाँ पे बना है? गुजरात में बना है. ठीक है. कौन सा प्लांट यूज करेंगे? पॉरिपस जोलीफेरा, जो एक इन्वेजिव प्लांट है. इन्वेजिव मतलब इन्वेजिव एलियन प्लांट है जो वहां की नेटिव स्पीसीज को खत्म कर रहा है. एलियन मतलब इंडिया का नेटिव नहीं है. इट केम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड एंड बेसिकली इट केम फ्रॉम द मेक्सिको. ठीक है. So this is all for the first part of the environment current affairs. If you like the video, please subscribe to my channel. The Telegram group link is given on your screen. You can join my Telegram channel for the further updates. See you in the second part of the environment current affairs. Take care. Thank you.